Hi everyone, Ashish Kyal here, and I'm just checking if you are able to hear me out loud and clear. Warm welcome Deepak, Sandeep, बहुत सारे जन यहाँ पर जो जुड़ रहे. Sandeep Priya, it was a short notice when I asked that we will go live today क्योंकि बहुत सारी चीजें मार्केट में हो रही है. And before I move on, Nifty has shown a move towards 24,700, but was it actually tradable? That's the question. But 24,700 is here. When we saw the mark today morning of the opening, I'm not looking at the closing price yesterday, it was too random. Opening price के बाद में अगर हम देखेंगे तो ideally 24,650, 24,660 का हाई निफ्टी ने बनाया. So we are almost to that 24,728 mark, almost. When we started with the bear trap zone move, which was from 23,640, 23,640 से शुरू हुआ था ये जोन, और वहां से लेके 1,000 points of movement is done on the market, and it was simply fantastic. So that's what I can say. But before just going to go, and people who are there on YouTube, if you are able to hear me out loud and clear, this is especially for everyone who is worrying about यार हमारे प्राइस एक्शन का हुआ क्या, अभी कौन से लेवल देखना है, टाइम को क्या देखना है, आरएसआई का रीडिंग रॉन्ग होगा, मूविंग एवरेज का रीडिंग रॉन्ग होगा, सुपर ट्रेंड रॉन्ग होगा, एक केओस है. नाउ ऐसे केओस में हम ट्रेड कैसे करेंगे, ऊपर से ऑप्शन बिहेवियर तो वाओ, दिस इज simply are you if you are a trader, you are seeing all of those things that I'm talking about right now, the option behavior that you are seeing, the different movement that is happening across different. निफ्टी स्पॉट अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी अलग चल रहा है, सेंसेक्स अलग चल रहा है, निफ्टी फ्यूचर्स अपने अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अलग चल रहा है, और ऑप्शंस तो अपने दुनिया में ही चल रहा है. ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ में? आप लोग भी ये डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं क्या? हसन, शिवा, श्रीपद, आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम चेकिंग ऑन माय जूम ओवर हियर, एंड आई थॉट आई विल जस्ट चेक विथ यू ऑल. ये सारे चैलेंजेस हो रहे, मतलब कर क्या रहे हम, पैसा बना रहे कि नहीं बना रहे? अगर ऑप्शन बाय करके रखा, यार आज एक्सपायरी जीरो हो रहा है, सडनली मालूम चला लॉटरी लग गई, जीरो नहीं हुआ, प्राइस बढ़ गया. ऑप्शन सेल करके रखा है, लग रहा है यार ये तो जीरो ही होने वाला है, इसमें क्या ही स्टॉप लॉस लगा है, और सडनली पता चला वो 100 रुपया इन द मनी हो गया. शॉर्ट स्ट्रेडल अगर किसी ने किया था, कोई था क्या शॉर्ट स्ट्रेडल वाला यहाँ पे? शॉर्ट स्ट्रेडल वाला, एंड यू आर जस्ट नॉट श्योर व्हाट हैपेंड विथ यू. सडनली मतलब सब कुछ सही था सुबह तक, अचानक क्या हो गया? शॉर्ट स्ट्रेडल वाले कोई है क्या? पीपल ऑन यूट्यूब, आर यू श्योर यू आर ज्वाइनिंग मी? अरे बिफोर माई मूव ऑन, लेट मी जस्ट गो वेरी वेरी क्विकली on the Zoom, not the Zoom platform. I'm just going to go very quickly on my disclaimer, and then we'll come back to here कि कैसे देखना है इस मार्केट को. And let me just share across my disclosure very very quickly, and then we move on to the post-mortem of how to go about it from here on, what to see, how to see every such thing. Just to mention that Way Strategy Advisors, we are a SEBI registered research analyst. Whatever we are doing here is purely learning perspective. Investment in security market is risky, and the risk has only increased. Registration granted is in no way guarantee of performance. Keep that in mind. This is a quick disclosure, and you can also join my Telegram channel. Every one of you, you can join the Telegram channel. Ensure you do not click on ads below the Telegram because there are some fake ads that comes. So ensure आप ads पे click ना करें. So this is the Telegram channel. Directors have shared it across even on the YouTube, so that everyone and people on YouTube, are you joining and subscribing my channel? If yes, then give me a thumbs up so that I know you are joining and subscribing here. So yahan par I am going to answer everyone's question. I want everyone to start putting on questions. So this is where I'm going to talk about markets, what happened. दो पर्सपेक्टिव आज के वेबिनार का. देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स व्हिच आई एम गोइंग टू एड्रेस टुडे. वन इज सीएस, हाउ टू मैनेज इट, how to look at our indicators, how to look at our time cycles, how to look at new wave, how to go about it. That is first. The second perspective is what is next from here. Tomorrow, what's going to happen? Why it's a rare setup? Why things are changing? What's going to happen tomorrow? I'm going to do that. So ये दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा मैं. And if you have you joined the Telegram? Okay, lovely. So let me just share across what is closing auction session. So होना क्या है यहाँ पे? आई एम जस्ट चेकिंग पीपल हु आर देयर ऑन यूट्यूब, आर यू देयर? द लिंक इज नॉट शेयर्ड अक्रॉस ऑफ Zoom platform. Let me just share and pin that across. Just give me a second. And I want one person from my team to just check on the YouTube if people are able to
उनके भी कमेंट्स लेने हैं हमें. इफ हु इज चेकिंग ऑन यूट्यूब, लेट मी नो so that we are able to pick up the comments from YouTube also. Did you suffer loss today? No, I did not suffer the loss today, fortunately. And यहाँ पर ये is it gambling है, ये लग रहा है. मतलब there are challenges and it looks like gambling. Telegram link is not shared across on YouTube. I'll just going to share it across very quickly on the Telegram link on YouTube also. Director Saab, please share across the link on YouTube as well. And just give me a second. अभी करना क्या है? सीएस है क्या? देखिए, सबसे सिंपल चीज अगर देखी जाए, what was earlier happening is the closing of the market and how you have to deal with it from here on. And closing auction session क्या हो रहा है? 3 o'clock to 3:30 there was earlier how it was happening is we were taking a weighted average price. Average closing होता था इंडेक्स का, मालूम है आप लोगों को? एवरेज क्लोज. सो एवरेज क्लोज मतलब क्या होता था कि 3 o'clock to 3:30 जो भी चीजें हो रही थी, दैट इज एन एवरेज क्लोज दैट यूज टू हैपन फॉर इंडेक्स, फॉर स्टॉक्स, फॉर एवरीथिंग. Now that average close can be volume weighted average close. तो अगर वॉल्यूम्स कितना हो रहा है उस हिसाब से एवरेज क्लोज. एंड देन दी आपने देखा था 3:30 को इंडेक्स क्लोज एक लेवल पे हो रहा है, बट आफ्टर अ मिनट आपको एवरेज क्लोज कोई और लेवल का दिख रहा है. दैट इज हाउ प्राइस डिस्कवरी वाज हैपनिंग सिंस years along. Now what happened is all of a sudden, just give me a second. हाँ, उसके बाद में क्या हुआ कि यहां पर just a second. I'm just checking and chatting with my team here so that. So overall, what happened is they adopted a method which is globally. They adopted a method which is globally widely followed method, where the average close of the index happens through a auction process. So average close of the index, if it is happening through an auction process, which means that whenever the market अभी कर क्या रहा है, so 3:15 तक market normally trade हो रहा है using including the F&O stocks या mid cap stocks, all of those stocks. 3:15 to 3:20 जो F&O स्टॉक्स है उसका ट्रेडिंग 3:15 को बंद हो गया. कूलिंग पीरियड 3:20 तक है. नाउ यू कैन गो एंड प्लेस योर ऑर्डर एज अ लिमिट और मार्केट ऑर्डर फॉर दोज F&O स्टॉक्स इन द स्पॉट प्राइस. तो स्पॉट प्राइस में आप वो ऑर्डर डाल सकते हो क्लियरली, एंड वो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो वहां जाके कि आपको कितने पे वो बाय करना. अभी 3:25 के बाद में मार्केट ऑर्डर बंद हो जाता है, लिमिट ऑर्डर का. तो फॉर एग्जांपल, लेट मी गो ऑन माय नोट्स एंड एक्सप्लेन इट यू इन अ वेरी सिंपल वे, एंड देन विल कम बैक टू द फोरकास्टिंग ऑफ द मेथड्स एंड हमें क्या करना है. पहले तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं. सो आई एम जस्ट ओपनिंग अप द व्हाइट बोर्ड हियर. एवरीवन इज एबल टू सी माय व्हाइट बोर्ड? Okay, yeah, everyone is able to see my whiteboard. So, just a second. Now, suppose, simply look at it. This is my, let us look at it in a very simple way. We are looking at an order book here. ऑर्डर बुक मतलब क्या है? यहाँ पे बिड है, यहाँ पे आस्क है. मतलब जिसे बेचना है वो यहाँ पर रखा है, जिसे खरीदना है वो यहाँ पर देख रहा है. नाउ बिड एंड आस्क है. दिस इज बाय एंड दिस इज सेल. आई वांट टू बाय निफ्टी
नॉट निफ्टी, क्योंकि वो फ्यूचर्स में हो रहा है फिलहाल, फ्यूचर्स तो 330 तक है. आई वांट टू बाय से अ स्टॉक विच इज, आई वांट टू बाय क्वांटिटी एंड प्राइस. यहां पर भी आ जाएगा एक और, प्राइस एंड क्वांटिटी. सो मुझे ये खरीदना है 100 रुपीज पे. स्टॉक का 315 का प्राइस था. एट 3:15 PM say the stock closed at 100 rupees. That was the price. Now after 3:15 to 3:20, ये हमारा 3:15 to 3:20 जो है, ये कूलिंग पीरियड है. If I understand it correctly, I can be wrong, so I'm just explaining what I understood. This is cooling period. From 3:20 onwards, you can place limit and market orders both. Place orders आप भी डाल सकते हो, सब जन डाल सकते हैं. From 3:20 onwards until 3:25. Let us look at it not 3:25. 3:25 के बाद मार्केट ऑर्डर नहीं, लिमिट तो जा ही रहा है, तो 3:28 तक आप खाली लिमिट डाल सकते हो एंड उसके बाद कुछ नहीं कर सकते. Once you done that, so what you will do is until from 3:20 to 3:28 period में you will place a price which was at 100 rupees. तो स्टॉक का प्राइस था 100 rupees. Now you want to buy that stock at 99 rupees and आपने क्वांटिटी डाल दिया 1000. किसी ने सोचा नहीं, आई वॉन्ट टू बाय दिस स्टॉक नॉट एट 99, आई एम ओके टू बाय द स्टॉक एट 101 ऑल्सो. आई एम बाइंग दैट स्टॉक एट 101 ऑल्सो. आई प्लेस्ड एन ऑर्डर एट 2000. Someone said no, I want to buy the stock, I am okay to buy at 105 also. Something happened, he want to buy at 105. He placed an order of again 2000 shares at 105. Now the stock CMP was 100. Now यहां पर जो सेलर है, सेलर बोल रहा है कि यार मुझे वो स्टॉक बेचना है, मुझे वो स्टॉक बेचना है एट द प्राइस ऑफ से 99. आई एम ओके टू सेल माय 2000 क्वांटिटी एट 99. Someone says I want to sell the stock at around even at around 101. I'm okay to sell the stock at around 101 for say 3000 quantity. And someone says I want to sell my stock at 106. I want to sell 106 at say 500 quantity. So मेरा order book बन गया. Now when the order book is forming, someone who wants to buy at 105 is able to, so cumulatively then the exchange matches all these orders together with the quantity at 325. Depending on the time when the order has come in and the best bid and the best price, it will start matching. Someone wanting to buy at 105 is essentially a market order because वो 100 पे चल रहा था, 105 मतलब market order कर दिया उसने कि जो प्राइस होगा मैं बाय कर लूंगा इस स्टॉक को. And that's how the orders are punched in. Now the matching starts. So 99 जो था वो मैच हो गया, 101 था जो मैच हो गया. Someone wanting to buy at 105 उसको नहीं मिला क्योंकि उसको 106 पे सेल करना है. मे बी बेचने वाले का भी मैच कर दिया. सो इट इज नॉट एसेंशियली 99 को मैच करेगा. इवन समवन हु इज रेडी टू बाय एट 105 कैन बी मैच्ड एट 99, क्योंकि जो सेल कर रहा है वो 99 पे बेच रहा है, 105 पे खरीदने रेडी है, तो ये भी मैच हो रहा है 99 के साथ. आर यू विथ मी एवरी वन ऑफ यू? सो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये दोनों बुक्स क्यूमुलेटिवली कंबाइन होके बेस्ट ऑर्डर बेस्ट प्राइस विद टाइम जाके सिस्टम में मैच हो रही है एट 328. एग्जैक्ट मैचिंग हैपेंस एट 328 को ये मैच हो रहा है. नाउ एट 328 व्हेन द मैचिंग हैपेंस, दैट टाइम बिकॉज ऑफ नॉट लेस लिक्विडिटी, अब हो क्या रहा है, अभी फंड हाउस है. आई एम गोइंग टू आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, you have to tell me yes or no. Fund house, will they be buying? They are looking for, they are participating. So fund house usually are long only. Long only मतलब उन्हें buy करना है. So fund houses are usually buyers. Yes or no? Mutual funds I am talking about most of the time. Most of the time retailers are looking for buying or selling. Usually buy करने का सोचते हैं कि भाई buy करके रखेंगे most of the time. तो हो क्या आ रहा है ना, they are long only. Most of the participants in the market who are participating here are long only. Because they are long only, there are more buyers here in the system. Buyers are very high. जो सेलर है वो बोल रहा है यार मुझे तो बेचना था, मैंने बेच दिया आज 315 को, मुझे हेडेक चाहिए ही नहीं. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द हेडेक ऑफ एनीथिंग लेटर ऑन. सो सेलर्स आर वेरी लेस इन द सिस्टम. अब हो क्या रहा है, बिकॉज द एंटायर buying is a lot more, it is skewed.
I was speaking to a friend, he mentioned also how they are doing it. So it is skewed on the buy side. इट इज स्क्यूड मतलब एक साइड पे बहुत बड़ा ऑर्डर बुक आ गया, दूसरे साइड पे ऑर्डर बुक काफी कम है क्योंकि सेलर कम है। तो स्क्यू होने के कारण क्या हो, जब मैचिंग हो रहा है और रैंडमली लोगों ने प्राइस प्लेस किया, क्योंकि 315, 322, 325 मार्केट ऑर्डर्स भी जा रहे हैं एंड रिटेलर्स भी प्लेस कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट एंड इंस्टीट्यूशंस आर वेरी लेस राइट नाउ बिकॉज एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू सी व्हाट्स हैपनिंग, हाउ इज इट मूविंग. What is happening is this is resulting into a sharp movement. And that's why the 328 matching, when it happens, suddenly 200 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जा रहा है. That's the reason, because buyers are a lot, sellers are less, and it is skewed. The data is skewed. The matching happens because a lot of market orders were there by the sellers or buyers at 3% band. तो बैंड कितने 3% है. मे बी एनएससी विल कम डाउन एंड से नहीं 3% बैंड को हम 2% करेंगे या समथिंग, वॉट एवर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट दे वांट टू डू. सो 3% अगर मैं लेता हूं 24,500 के ऊपर 3% मतलब कितना 735 पॉइंट, 700 पॉइंट्स का प्लस माइनस ऑर्डर्स आप प्लेस कर सकते हो सिस्टम के अंदर, विच इज अ नॉर्मल ऑर्डर बुक. दिस इज नॉट अ ट्रेड बुक. ऑर्डर बुक मतलब आपने अपना, आप गए ऑक्शंस में जाते हैं, ऑक्शंस में क्या होता है, एक बंदा बोलता है इतने पे खरीदना है, दूसरा बोलता है मुझे इतने पे बाय करना है, तीसरा बोलता है इतने पे बाय करना है, हाईएस्ट बिडर वाले को वो दे देते. ऑक्शन प्रोसेस हो रहा है. यहां पर भी वही चीज हो रही है कि एक बंदा बोला मैं 99 पे खरीदने रेडी हूं, दूसरा बोले 101 पे खरीदना, तीसरा बोले 105 पे खरीदना, सेलर बोल रहा है नहीं मैं तो 106 पे ही बेचूंगा. तो ये ऑक्शन प्रोसेस हो रहा है. एवरीवन इज ट्राइंग टू बिड एंड आस्क हियर, ऑक्शन प्रोसेस. नाउ द बेंड इज 700 पॉइंट्स, which means you can even place an order for 26,000 nifty. 700 पॉइंट से तो 25 300 तक आप प्लेस कर सकते हो, नॉट 26,000. when you are placing such high bid and ask levels, the matching happens instantaneously. So there is no problem with matching. There is no glitch in the system कि ये wrong price है. It is a random it's a random discovery price. I would say not an equilibrium discovery price. क्योंकि मैचिंग ठीक से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बायर्स बहुत है और सेलर्स नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेशन इज लेस. वंस द पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस फ्रॉम द फंड साइज, मतलब जो भी बिग प्लेयर्स है दे स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग. जिन्हें आर्बिट्राज करना है वो आर्बिट्राज करना शुरू करेंगे, बोलेंगे मैं ये यहां पर खरीद लूंगा, मैं फ्यूचर्स में बेच दूंगा, और वाइस वर्सा दे विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग. Then the difference जो कल हमने देखा, I think we saw a jump of 220, 230 points. Today we saw a jump of 160 points. Tomorrow we'll see a jump of 50 points. And so the wild movement will start shrinking and getting back to normal. Now ये सारी चीजें सेंसेक्स पे क्यों नहीं हो रही है? किन किन लोगों के इस दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई सेंसेक्स पे क्यों नहीं हो रहा है? ये सब अगर हो रहा है तो निफ्टी पे क्यों हो रहा है? Am I making sense? So 328 is the period where the bid stops and the price discovery happens at 328. इसलिए आप स्पाइक डायरेक्टली 328 पे देख रहे हो. ठीक है. बीएससी, द वॉल्यूम्स ऑन बीएससी, आज ही मैं एक एनएससी का ट्वीट देख रहा था या न्यूज़पेपर में भी आया था. आई थिंक बीएससी वाज समवेयर अराउंड 10-15 crore or something, I don't even remember, and NSE was 1,000 crore. So the amount of trade that NSE is handling is nearly 10, 20, 50 times more than what BSE is handling. So BSE के ऊपर जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है वो फिर भी सेंसिबल हो रही है, बिकॉज BSE is not handling that much of volume data. Majority of the orders that get punched in by a broker also is NSE by default. Majority of them, unless the stock is not listed on NSE. Now that is the challenge. So because there is heavy volumes and because the volumes that are जो यहां पर हो रहा है वो इतना ज्यादा हेवी वॉल्यूम्स हो रहा है एनएससी के ऊपर, और पूरा पूरा स्क्यूड है ऑन द बाय साइड. सेलर है ही नहीं, सब बाय करने में लगे हुए. सो स्पाइक अप आ रहा है exactly at 328 when the auction closes and the price discovery level comes out, which is known as an equilibrium price discovery. Now ये पूरे इसमें गेम क्या हो रहा है? It has become like a gamble कि if you buy at 315, 325 को कॉल ऑप्शन ले लो, 328 को कॉल ऑप्शन बेच दो, फ्री मनी. बट फ्री मनी डजंट हैपन, राइट? शॉर्ट स्ट्रेडल वालों का गेम किया. शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब आपने कॉल और पुट दोनों अगर बेच के रखा है,
You have seen that. So this is, I would say, liquidity issue. This is not equilibrium. This is skewed. This is random. And so price discovery is highly inefficient. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं. सपोज निफ्टी स्पॉट चल रहा है 24,000 पे और कॉल खरीदने वाले 100 जन है. 24,000 पे निफ्टी स्पॉट चल रहा है फिलहाल के लिए. कॉल खरीदने के लिए 100 लोग है कि मुझे कॉल खरीदना है, मुझे आज निफ्टी खरीद के जाना. बेचने वाले खाली 10 जन है. क्या होगा ऑप्शन के अंदर? लेट्स गो टू द ऑप्शंस नाउ. व्हाट विल हैपन इन ऑप्शन if there are 100 people who wants to buy call option but only a few people wants to sell call option? What will happen to the call option price? It goes up. अभी 100 लोग क्यों कॉल ऑप्शन खरीदने आ गए? ऑन द एक्सपायरी डे big players are buying options. Usually on the expiry day, big players are buying option or selling option. Everyone, I want you to participate and tell me. मॉर्निंग में, नॉट ड्यूरिंग द क्लोजिंग. मतलब उन्होंने 2 दिन पहले पोजीशन क्रिएट की होगी. yesterday they created position, in the morning they created position. They would be selling option because selling option probability of making money is very high. So big players are selling option. When will they want to square off their position? Square off कब करेंगे? श्रीपद, रवि, बलबीर, रामचंद्र. When will they square off their position? They will start squaring off at around 310, 315 के आसपास. Yes or no? When they square off position, जो सेलर होता है वो स्क्वायर ऑफ करने जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? कॉल ऑप्शन में बाय करना पड़ेगा. कॉल या पुट, इधर वेज, इट कैन बी बोथ साइड, बिकॉज पुट भी करेगा, कॉल भी करेगा, वॉट एवर डिपेंड्स. उसे बाय करना पड़ेगा बिकॉज लिक्विडिटी इतना कम हो चुका है और ऑप्शंस का प्राइस डिस्कवरी रैंडम हो चुका है. तो बिकॉज ऑफ दिस बाइंग इज इमर्जिंग. तो बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन, इफ यू गो एंड चेक द चार्ट टुडे, मैंने ट्वीट भी किया था, बोथ आर स्पाइकिंग अप पोस्ट 230 ऑनवर्ड्स. पुट ऑप्शन भी 400-500 पॉइंट दूर का स्पाइक अप हो रहा है. कॉल ऑप्शन भी 400-500 दूर पॉइंट का स्पाइक अप हो रहा है. बिकॉज नो वन वांट्स टू बी देयर अंटिल 315 to 330. एंड जो अटक गए शॉर्ट स्ट्रेडल 24,500 लेवल्स पे, यू कैन सी व्हाट हैपेंड विद देम. They ended up losing big money. I'll go and show you the chart of that option. Let me open up that so that it becomes much more clearly. Am I making sense to you all? Every one of you. So let me go and open up the chart of on Go charting. We'll see that. Any questions so far? Is it interesting? Am I making sense? Are you with me? I'm making it absolutely simple way. कुछ नहीं हो रहा है भाई 315 को मार्केट क्लोज हो जा रहा है लेकिन ऑर्डर बुक भरी जा रही है. इसका क्या मतलब हुआ मालूम है? सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, आप दुकान पे गए हो, मैक स्टोर पे, एप्पल के मैक स्टोर पे नया आईफोन लॉन्च हो रहा है. ठीक है, न्यू आईफोन लॉन्च हो रहा है, आईफोन 20 फॉर एग्जाम्पल. बहुत जबरदस्त. वो लोग कह रहे 315 तक हमने आईफोन बेच दिया. अगर आपको अभी लेना है 315 से 328 के बीच में, जो हाईएस्ट बीट डालेगा हम उसे बेचेंगे. नाउ 320 से 328 के बीच में हमने बीट करना शुरू कर दिया, ऑक्शन करना शुरू किया उन्होंने. एंड वो लोग ने अपनी ऑर्डर बुक बनानी शुरू कर दी. वंस दे सी दी ऑर्डर बुक कि भाई इतने लोग खरीदने के लिए रेडी है, मेरे पास इतना माल पड़ा है, मैं इतना माल बेचने के लिए रेडी हूं, मुझे ये प्राइस पे चलेगा, इस प्राइस पे इन्हें खरीदना है. Now that order book starts building up. Once the order book is ready, 328, they open a price when they see the best profit that they will make, and that's the auction is closed at that price. Same चीज यहाँ पे 315 market closes, auction process starts. You can participate, pat your bid there, and maybe it works for you, maybe it doesn't work for you, and that's how it happens. Now ये पूरे process में, before I go to the options chart and start discussing about it, now how do we look at our wave theory? How do we look at our time cycle? What is going to happen? What is my price action? What is my stop loss? What happens to moving average? Because of this happening, can I say randomly मेरा जो levels है सब चेंज हो रहा है. RSI का रीडिंग चेंज हो जाएगा, मूविंग एवरेज का वैल्यू चेंज हो जाएगा, सुपर ट्रेंड का वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्राइस एक्शन का गेम हो जाएगा. एवरीथिंग हैज जस्ट चेंज्ड.
on Nifty spot price. Nifty future price, nothing changed except the time, because Nifty futures now trades until 3:40. Nifty future, nothing changed until 3:40, but the time changed क्योंकि 3:30 तक ट्रेड नहीं हो रहा, फ्यूचर 3:40 तक ट्रेड हो रहा. So whatever method, I'm going to go on the chart and show you. So you might want to note it down. If you are applying time cycle, the spot will continue to work well. 15-minute chart का time cycle can continue to work well on a spot chart. प्राइस चार्ट अगर मुझे देखना है, अगर मुझे आरएसआई लगाना है, मुझे सुपर ट्रेंड लगाना है, मुझे कोई भी इंडिकेटर लगाना है, मुझे प्राइस एक्शन लेवल्स निकालना है, दैट हैज टू बी डन विद अ फ्यूचर्स चार्ट ना. फ्यूचर्स चार्ट. यू शुडंट बी लुकिंग एट द मार्केट कि यहां से निफ्टी 250 पॉइंट नीचे खुला है, 250 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, 250 पॉइंट इज डाउन. वो रॉन्ग है. फ्यूचर प्राइस पे देखो, फ्यूचर प्राइस जो दिखा रहा है दैट इज द राइट प्राइस, because that is purely because of the trading volume that is happening and not auction. The next 10 days और next 1 week to 10 days, 10 दिन भी नहीं लगेगा, मुझे लगता है 7-8 ट्रेडिंग सेशन तक, 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन तक the discovery will happen properly and the closing will happen properly, because the arbitrage funds will come in, the big players will come in, they know the process is now smooth, they will start doing a small trade. Once they see it's working and they are able to make profit, they will come out with big chunk. When they come in with big chunk, the profit shrinks, arbitrage opportunity is very less, and the price discovery becomes prudent. Next एक हफ्ता आपको carefully manage करना in this kind of a scenario. Until then, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपायरी डे पे ऑप्शन ट्रेडिंग रैंडम हो चुका है. वो डे पे 2 बजे कल का जो मूवमेंट हो रहा था वो 3 o'clock के बाद हुआ. ऑप्शंस में आज का जो मूवमेंट हुआ 2:30 के बाद होना शुरू हो गया. कल शायद ऑप्शंस में मूवमेंट सुबह से ही होना चालू हो जाए बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. बट ऑप्शंस ऑफ नेक्स्ट वीक विल ट्रेड करेक्टली. ऑप्शंस ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी विल ट्रेड रैंडमली. कैन आई अगेन एक्सप्लेन दैट? अगर आप नेक्स्ट वीक का ऑप्शन ले रहे, that will find a proper price discovery, because next week option is driven by futures price. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, coming week का option expiry is going to be driven by futures and the futures price, and futures price is driven purely demand supply trade जहां पर हो रहा है. Whereas the expiry day पे the option price is determined solely by the expiry of the Nifty, which is right now random. So expiry day पे positions आपको अगर लेनी है तो आपको आज के expiry की नहीं ले सकते हो, आपको next week expiry की लेनी है. समझ में आ रहा है क्या कुछ कि confusion हो रहा है? Take position, ये सब आप नोट कर सकते हो. Take position of next week expiry on the day of expiry. मैं सारे नोट्स बना के भी आपको दे दूंगा. Now if I go on the chart here, let me show you on go charting first कि option में हो क्या रहा है. How many of you are trading in option here? I just checking if you are trading in option and if I am making sense overall. I'm going to write it down. Don't worry about it. Let me go on the chart here and let me just share my screen. So when we are looking at this, are you able to see the screen here? Every one of you? Okay, this is a short straddle chart. मैं यहाँ नहीं आ रहा, मैं एक्सपायरी पे आ रहा हूँ, मैं चार्ट पे आ रहा हूँ. Now things may look a little more better rather than random. I'm going to break it down very, very simply for every one of you. Now यहाँ when I'm looking at an option chart, ठीक है, this chart will not make any sense to you. कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है, कॉल ऑप्शन का ओआई बढ़ रहा है और मार्केट ऊपर क्लोज हो रहा है. मतलब क्या है यार, मजाक ही, क्या मजाक ही चल रहा है फिलहाल तो. लेकिन we have to live with it. We have to fight that next 1 week, including me and you, where we ensure we do not lose money because of this random movement. And everyone is able to see my screen? Okay. Now if I'm going to open up, let us just look at what is next for market and let us look at what the premium I'm talking about. 24,000 strike price का 24,500 का call option I want to put here.
So I'm going to come here, 24,500 ka call option. I'm going to put 24,500 ka call, and you are going to see this happening here. And this is a 24. I'm going to put across 5-minute chart. This is 24,500 ka call option. Okay, I'm going to take this much of data. Where do you think the majority of the volume happened? People from Brahmastra and Trishul participant. Volume profile. This is volume profile. 24,500 call option volume profile. Where is the volume happen? 35 rupees. The majority of the volume happened at 35 rupees for a 24,500 call option. When that volume happened, can you see the 35 rupees volume actually was started happening from 250 onwards? Can you see? So if I have to check, निफ्टी फ्रॉम 155 2 बजे के बाद निफ्टी प्राइस इज ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा था? Some people are not able to see the screen. I'll reshare my screen again. Meanwhile, what I want to ask you is, after 2 o'clock, everyone is able to see the screen now. So Nifty prices were moving down from 2:30 p.m. onwards slowly and steadily. However, 24,500 call option showed sharp spike, showed upward movement until 3:15 in anticipation of random upside close. So this is opportunity. कैसे? I'm going to tell you. This is opportunity. This is classic opportunity. यहां पर, और ये opportunity next 10 दिन के लिए ही है खाली. This opportunity will exist only for 10 days. Let me edit it. यहां पर opportunity not even 10 days, for next few days. Hardly few days भी रहेगा तो पता नहीं. यहां अगर आप ये देखेंगे, now why next few days? The opportunity is there only for next few days. Why? Because over here, can I say someone was betting big at 35 rupees for 24,500 call option to go up? Nifty was at 24,470. He was betting until 3:05. Can you see the time? 3:05 से 3:10 तक. This candle is 3:10 से 3:15. 3:15 के बाद भी options prices either trade. So option continues to trade. 3:15 तक यहां पर बाइंग हो रही थी. मतलब big players created positions at these levels, and so they were not big players. Maybe whoever, it can be retailers also because the volumes were thin. So it can be anyone. They created position in anticipation for a random close, which can be upside, which follows yesterday's movement. And so they did that, and it happened again. So अगर ऐसे में participate करना है, see, this is a simple 0-0 वाला game. Simply buy a call option and sell a call option on the expiry day. At the money, yeah, OTM depends on you. But the risk is high. It is a 0-0 game. If it goes in your favor, you make. If you goes out, you lose. So you have to decide that. लेकिन naked नहीं करना है. Naked में loss ज्यादा होगा. तो करना क्या है? 24,500 call ले लिया, 24,600 बेच दिया. By doing that, if an upward spike happens, you end up making money. If doesn't happen, you don't make anything. But this happens. ये 24,500 call expiry खाली आज ही का है. Okay? आज ही का है. अनूप नंदन लिख रहे सर, I made money here. If I go back on 24,500 for the next week expiry, 24,500 call option, देखते हैं क्या हो नेक्स्ट वीक का. 24,500 कॉल ऑप्शन नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है. कैन यू सी दैट? आर यू विथ मी? Nothing changed. Someone who don't want to gamble
bet on the next week expiry. Someone who is wanting zero game, bet on the today's expiry, but it can be random. Can we buy both call and put? I'm not advising you to buy or sell. I'm just showing you this is how it's happening. Now you have to see what you want to do. It's a gamble. So it's up to you. I'm not recommending you to do that because it's very risky. If it goes, your capital can go zero. So it's very risky. So I would suggest you avoid it unless you hedge it, unless you are okay to lose it. Avoid it. Do not gamble. Rather bet on the next week expiry or the month end expiry so that next week month end normal chal raha hai. I said it is a casino today. Absolutely. I never use that term for our market, but it is a casino. यहाँ पर. Now what I have to do, I'll go on my trading view now, and I'm going to check across what we have to do with what's happening with our wave pattern. Am I making sense, guys? AKTG Time Raider Trust surge level, and it's working fantastic. Glad to know. Glad to know that. Now, if I'm looking at this, let us just start looking at markets in a very unbiased way. What is happening in closing is I've already told you. Simply look at it. When I look at Nifty futures, okay, let us first look at Nifty futures. Can I say Nifty futures price action is proper? Guys, yes or no? I want everyone to participate here. क्या Nifty futures का price action proper है यहाँ पे? Nifty futures price action is proper? This kind of closing will impact patterns? Yes. Will it impact price action? Yes. Will it impact everything? Yes. उसी के लिए तो ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं मैं. ऑल्टरनेटिव क्या है? ये सारा चीज इंपैक्ट हो रहा है, सब कुछ मैस अप हो रहा है एक्सेप्ट द फ्यूचर्स चार्ट. द फ्यूचर्स चार्ट इज नॉट मैसिंग अप. द फ्यूचर्स चार्ट इज स्टिल मूविंग सिस्टमैटिकली. The reason market will again show a gap down of 200 points tomorrow or 150 points tomorrow does not mean Nifty is falling by 150 points. Please do understand. इसका मतलब ये नहीं निफ्टी 150 पॉइंट नीचे, 159 पॉइंट्स नीचे निफ्टी है, आज सुबह 250 पॉइंट नीचे था. डू नॉट लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सिंपली look at it from the perspective of futures. तो अभी हमें करना क्या है? जो भी स्टडी आप अप्लाई कर रहे हो, टाइम साइकिल को छोड़ के वो आप फ्यूचर्स के चार्ट पे अप्लाई करो. बिकॉज आरएसआई का रीडिंग तो गेम हो गया है. अगर आप देखेंगे निफ्टी पे जाके, अगर मैं 15 मिनट का आरएसआई 15 मिनट, आई गो ऑन द चार्ट, आई अप्लाई आरएसआई ऑन अ 5 मिनट चार्ट, आई रिमूव माय एके इंडिकेटर एंड इफ यू चेक 5 मिनट्स, कुछ भी है यार, कुछ भी है. इफ यू चेक आरएसआई ऑन अ 5 मिनट चार्ट, इट विल बी रैंडम. सी कहां था निफ्टी? यहां था. 5 मिनट आरएसआई सडनली 80. लुक एट 15 मिनट आरएसआई. 15 मिनट आरएसआई देखो कहां था. आरएसआई इधर था, कहां पहुंच गया. मूविंग एवरेज देखो कहां पहुंच गया. आवरली चेक करो. Hourly RSI was here. Hourly RSI was here. Suddenly एक spike के कारण RSI change. RSI will change. Moving average will change. Super trend will change. Everything which is related to price will change. You have to stop using spot for taking a decision on Nifty. You can look at Sensex. Sensex is not random to the extent of Nifty. Sensex is still sensible. As of now, Sensex is still sensible. So Sensex का open wrong है, लेकिन क्योंकि ओपन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने रॉन्ग किया. आज का ओपनिंग प्राइस भी रॉन्ग है. इट इज नॉट ओनली क्लोजिंग प्राइस, इट इज द ओपनिंग प्राइस विच इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आइडियली फ्यूचर्स में ओपनिंग प्राइस ठीक है, कल के यहीं ओपन हुआ, हाई वही बना, सिस्टमेटिक मूवमेंट आया, एवरीथिंग लुक्स गुड. बैंक निफ्टी रैंडम है, कुछ भी हो रहा है. बैंक निफ्टी क्लोजिंग यहां, कल का क्लोजिंग यहां, मतलब क्या मजाक है. इट्स अ जोक. People, they are just not understanding the challenge and the problems everyone has to face because of this. It's not only traders, it is investors, it is big players. It will scare off FIs more. Something like this will scare them off. What is this randomness? It has to be rolled out in a systematic fashion, in a slow process. But what we have to do? System hai, we need to follow the system. We'll follow the system. So now what we have to do is price action. Look at this chart. For everything cycle, we'll look at the cycle chart. And the cycle chart is working time के लिए. Start looking at cycle chart.
So I'm going to give you a very systematic note what you have to do, how you have to do. I'm going to write down. Shall I do that? अगर सब लिख बोलेंगे तो I'll write down in the pointer format आपको क्या देखना है, कब देखना है, आपको ऑप्शन कब नहीं करना है और कब करना है. Shall I write it down in the notes? You can then take a snapshot. But look at cycle. Look at cycle. In this randomness, are you looking at the cycle? This is crazy. ये चार्ट दिख रहा है मेरा टाइम साइकिल का. Despite of the randomness, the time cycle is working like magic. And if you look at it, we are indeed, ये दिख रहा है, जबरदस्त है, क्या चला है, जबरदस्त. साइकिल को देखो, मस्त, एकदम सिस्टमैटिक. टाइम is still systematic. Price action random on the closing and opening. उसके लिए futures देख रहे हैं. Now, if you look at it, now let's go back to wave theory. Let us just look at it from a wave theory perspective, what we have to do next, and then मैं वापस से आऊंगा सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए. If I go to my futures नहीं स्पॉट दे, हाँ, वेव थियरी, बैट ट्रैप जोन था 23,640 पे बैट ट्रैप हुआ. We were expecting third wave should come on the upside. Third wave came on the upside. Now this is a hurdle zone. If I look at it, this is 24,600 is a hurdle zone. अगर मैं genuine price देखूं, genuinely निफ्टी ने 24,640 टच कर लिया. करेक्ट प्राइस 24,648 ट्रेडेबल था, 24,640 आ गया. 24,728 नहीं आया, 24,640 आया. चलेगा क्या? 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल गया है. इज इट ओके? We got a movement of 1,000 points from here. Is it okay to now book profits, which is near the prior swing high, which is also the hurdle level? Can you see here? This is the hurdle zone. This is the area where we had some गड़बड़. तो मतलब हम उस जोन में आ चुके हैं प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से, प्योरली ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव. इफ आई एम लुकिंग एट इट, वी आर नाउ एट दिस जोन, which means this is the level where momentum can reduce. If that's the case, हम ये थर्ड वेव टर्मिनल में, एंड मेरा 55 डे का साइकिल ड्यू है 14th अगस्त को, which means we might start seeing some kind of a profit booking or a slower momentum or a move down until 14th August. It's time to book out something in this third wave which is going on. And this third wave, if you are looking at this third wave, it is forming very, very clearly a subdivision. So टर्मिनल है तो इंटरनली सब डिवाइडेड होगा. इंटरनली सब डिवाइडेड होगा मतलब थर्ड वेव का ए खत्म हो चुका है. मैं ए को 24,780 पे खत्म नहीं करा. मेरे लिए वे लेवल होगा 24,640 का, जहां वेव ए खत्म हो गया. बिकॉज इट्स अ टर्मिनल, इट्स अ करेक्टिव मूव. वी आर राइट नाउ इन वेव बी ना. वेव बी कब तक है? अगर हमने कल 24,650 660 निकाल दिया तो मेरा लेवल कौन सा है? 24,660. Not on the opening tick. I am going to wait until 9:20 to see 9:30 and to see 24,660 अगर निकाल रहा है मार्केट, डन है. नहीं निकाल रहा है, पॉसिबल है कि हम नीचे जाएंगे. विल फाइंड सम काइंड ऑफ अ सपोर्ट हियर 24,300 पे. वी विल ओपन गैप डाउन अगेन. डज नॉट मीन प्राइस एक्शन गैप डाउन है. इट इज ओनली रेंडमनेस बिकॉज ऑफ विच वी सी द गैप डाउन हैपनिंग. सो मेरा स्ट्रेटेजी क्या है? एनी मूवमेंट फ्रॉम हियर again on the downside, we will go back towards 24,350 420 के आसपास. ये वाले जोन पे अगर हम आते हैं, रिवर्सल करता है, I will buy. So मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल है, buy on dips for the coming week expiry, not Sensex, coming week expiry of Nifty I'm going to buy. टारगेट 24,660, वापस से हम आ सकते हैं 24,620. सो करना क्या है? हमें buy on dips अपनाना है. बिकॉज वेव बी को नीचे राइड करने तो कॉल बेचना पड़ेगा, लेकिन प्राइस कंफर्मेशन नहीं है, प्रीवियस लो के नीचे बंद नहीं हो रहे. सो आई एम नॉट गोइंग टू सेल अ कॉल ऑप्शन. थोड़ा ट्रिकी है. आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ कॉल ऑप्शन नाउ, क्योंकि अभी मेरा जो मोमेंटम 1000 पॉइंट का मिलना था, 800 600 800 डिपेंड आपने कितना कैप्चर किया, उतना हो गया. सो नाउ आई एम गोइंग टू बाय ऑन डिप फ्रॉम पोजिशनल पर्सपेक्टिव. फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव आई कैन सेल ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, बोथ साइड्स. Options of next week will behave normally. Do not panic for option trading. Only on the expiry day you have to panic. Other than that, it will behave normally. So you have to
futures will behave normally, options will behave normally, spot price will behave abnormally. We can trade unless it's an expiry date. Am I making sense to you all? So this is my mood. I'm going to buy the market, but I'm going to buy it on dip. कौन से लेवल पे बाय करेंगे? 24 350 330 360 के आसपास रिवर्सल कैच करेंगे, गैप फिल होगा, पब्लिक बेरिश होगी, हम बाय करेंगे. And then we will buy for what? Not big target. Now I am going to scalp for 550, 24 560. I am done. अगर कल 24,660 15 मिनट बाद निकल जाता है, मे बी दिस इज एक्सटेंडिंग फर्दर, आई विल पार्टिसिपेट अंटिल 24,728. Am I making sense? That's my view, that's my mood for tomorrow. Now I'm going to go on the whiteboard and I'm going to give you notes which you can just use it very, very carefully. Is it interesting? Are you with me, every one of you? आज का वीडियो, see, I was traveling, I was in Trichy, I went to Madurai, I went to Rameshwaram, I have been loving what I was doing. I was trading, I was looking at it, I was picking at IIMs. ये सारी चीजें कर रहा था. I thought I'll take a break today, but नहीं. I thought I will come live because you need me, and so I came live. Because बहुत सारे, I even told my team, I'm not going live, I'm exhausted, and market का थोड़ा expiry भी है. I have to check how it's moving. I have my trade, but still I came live just for you all. Because you are loving what I do, you are putting your comments. So मुझे comments चाहिए, आपके like चाहिए, share चाहिए, so that I know you are loving what we are doing, and so I'm going to make it happen for you. That's my commitment. I'm going to now write down my notes. Where is my whiteboard gone? Just give me a second. I'm going to go on my whiteboard and I'm going to write down some notes for you all. Whiteboard पे, new whiteboard. Let me go and connection error. What is that? Don't show this again. I'm going to launch. Start drawing. करना क्या है? ठीक है? As a pointer form में आप लोग को क्या करना है? Square of position. So CAS से कैसे बचे? CAS से कैसे बचे? मैं लिख देता हूं यहां से. We have to save ourselves, right? पहली चीज, no short straddle for sure on expiry day. No short straddle on expiry day. Straddle for current, for 2 days, for expiry day strike, for expiry day. I'm talking about expiry day. उस दिन ये करना ही नहीं है. Position for expiry day position. ठीक है? ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो एक्सपायरी डे, ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग एक्सपायरी डे बाइंग ओनली विथ स्प्रेड, विथ स्प्रेड. ठीक है? स्प्रेड के साथ आपको ऑप्शन डे बाइंग करना है. नेक्स्ट आपको क्या करना है? वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट सी दिस थिंग्स. नेक्स्ट वीक सो क्या क्या नॉर्मली बिहेव कर रहा है? निफ्टी फ्यूचर्स. ठीक है? निफ्टी फ्यूचर्स नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब इट इज कॉल्ड एज मिड एक्सपायरी बोलते हो. नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शंस आर नॉर्मल until 340. ठीक है? ये नॉर्मल है 340 PM तक. ये नॉर्मल है, आपको कोई लोड नहीं लेना है. नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है. नेक्स्ट एक्सपायरी का मतलब अभी एक्सपायर हो रहा है, उसके बाद वाला. निफ्टी फ्यूचर्स नॉर्मल है. सो नेक्स्ट एक्सपायरी निफ्टी फ्यूचर्स का नहीं, निफ्टी फ्यूचर करंट एक्सपायरी भी नॉर्मल है. टाइम साइकिल अगर आप यूज कर रहे हो, फॉर टाइम साइकिल आई एम स्टिल इवेल्युएटिंग, बट यूज निफ्टी चार्ट, use nifty spot for time cycle. For any indicator, use futures chart. ठीक है? For wave count, you can't really do on futures क्योंकि प्रीमियम डिस्काउंट का इशू है फॉर नाउ, तो you have to ignore those past these things. For any indicator, use futures chart.
डिराइव स्पॉट लेवल, करेक्ट स्पॉट लेवल अगर आपको डिराइव करना है, स्पॉट लेवल कैसे करना है? फ्यूचर का चार्ट ले लो, फ्यूचर का प्राइस माइनस कितना प्रीमियम पे चल रहा था ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग इंट्राडे, माइनस प्रीमियम। क्लोजिंग नहीं देखना है, ओपनिंग नहीं देखना है, 10 o'clock का प्राइस ले लो। आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यू कैन टेक एनी प्राइस विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सो यू कैन टेक द प्राइस 10 के बदले 9:30 का प्राइस ले लो, यू विल गेट द करेक्ट 9:30 AM। दिस विल बी द करेक्ट स्पॉट लेवल, फ्यूचर प्राइस माइनस प्रीमियम। तो फ्यूचर अगर समझो 24,700 है, प्रीमियम 60 पॉइंट्स का है, वो आपको समझ आएगा 9:30 को, तो आप स्पॉट लेवल समझ आओगे। सो फ्यूचर प्राइस स्पॉट लेवल डिटरमिन करो। केएसटी अप्लाई करना है, यू हैव टू डू इट एनी इंडिकेटर ऑन फ्यूचर चार्ट। एक इंडिकेटर करना है फ्यूचर चार्ट, एवरी इंडिकेटर हैज टू बी फ्यूचर चार्ट। ओके, यहां पर पंकज आपका नंबर ड्रॉप करिए, माय कलीग विल कॉल एंड हेल्प यू आउट। एंड समटाइम्स द बेस्ट ट्रेड इज नॉट टू ट्रेड। सो इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हो। एक्सपायरी डे बाइंग ओनली विद स्प्रेड, निफ्टी फ्यूचर नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शन नॉर्मल है, टाइम साइकिल यूज निफ्टी स्पॉट, फॉर एनी इंडिकेटर यूज फ्यूचर चार्ट, derive spot level future price minus premium at 9:30 AM, so you will know what is the correct spot price. Am I making sense? Will it be useful? इसका snapshot आप ले सकते हो, और I'm also going to take a snapshot and then I'm going to just share it across how I'm going to look at it. CAS से कैसे बचे, थोड़ा सा राइटिंग इशू है, but just keep this in mind. I'm also going to do that. और I'm open for questions, guys. Any more questions that you have? यहां पर संदीप आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए, माय कलीग विल कॉल एंड हेल्प यू आउट। Which terminal are you using for trading? I'm using HDFC Securities. I'm going to look at it. Shripad, we are going to do that. But before I go on, guys, we have very clearly, again, I'm just going to take a very quick poll. If you are going to be a part of Brahmastra or Trishul membership, I'm taking a poll. But before I go on, I just want to know, are you liking these short videos that I'm making? Are you loving what we're doing? Everything. I'm just checking if it is working for you. And today's session, was it interesting? You know, 1 घंटा हो गया हमारे बात करते करते. And I'm taking a poll. If you want to be a part of Brahmastra or Trishul membership, you can just participate in the poll, and the link will also be with you. You can also go and register yourself from the link. And I'm open for questions. Enjoying your levels. Thank you very much. Bank Nifty settled at the higher price, but price of calls have not increased. Because the next week futures price are not changing randomly. Futures price are correct. And the call option of next week is back to future, not spot. तो वो बराबर चलेगा. I've explained Yagna already about it. सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन आपका लेवल मॉर्निंग में एक्यूरेट है. अनूप नंदल, थैंक यू वेरी मच. Thanks for the efforts. Thank you. You are God of trading. I'm just explaining you everything I am understanding and contemplating कि हो क्या रहा है. I thought जितना समझ में आया उतना बताऊं. And कल हमारा I'll do that. अशित सेठ आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए बहुत ही क्लियरली. और कल हमारा डे 1 है गाइस, ब्रह्मास्त्र का मेंटरशिप का डे 1 है. वी स्टार्ट एट 7. लिंक्स विल बी अवेलेबल ऑन Zoom. आपके ईमेल पे लिंक होगी. प्लीज इंश्योर यू आर देयर ऑन टाइम. एंड इफ यू हैव क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन द नंबर which is going to be shared across with you. If you lost today, what should you do? Learn and trade. Simple है. स्पॉट प्राइस फ्रीज क्यों करे? 315 को नॉर्मल ट्रेडिंग बंद कर रहे इन दी F&O स्टॉक्स, सो स्पॉट प्राइस बंद हो जा रहा है वो टाइम पे. We have been vaccinated from CAS. Thank you very much. And AB price was greater than AB price of the day's close. ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की है already. And people who are there on YouTube, do ensure you are putting your comments, liking it, subscribing the channel, sharing it across. ये सारी चीजें आप करिए. It's going to really help me with
continuing with these kind of sessions, which I am looking at it. Do not lose confidence. I am going to be there for every Brahmi who is here, every mentee, and everyone who is not even a part of Gurukul. I am always here for you all. Do not lose confidence. This is turbulence, and we will overcome this turbulence. It happens once a while. We just need to see how do we manage our risk in this kind of situations. So do not worry about it. Markets are uncertain, but we will try to find out how the time works and how the gap works, and every one of you. Okay. Thank you guys for being here, and do not worry about anything. Poll is ongoing if you want to be a part of Trishul, which is Neo Wave with options. मजा आएगा इस टाइम ऑप्शंस के बारे में हम जब स्टडी करेंगे त्रिशूल में एंड ब्रह्मास्त्र में. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंट वेज इन विच वी आर गोइंग टू लुक एट इट. Rashmik Sethi कह रहे सर I'm lucky to have you as a mentor. Thank you. It's my pleasure. Thank you very much, guys. I'm signing off now. We'll see you again tomorrow, 7 o'clock in Brahmastra. It's going to be amazing. Have a wonderful time.